Assalamu alaikum, everybody. I'm Rabia Akhtar. I'm Director, Center for Security Strategy and Policy Research. Today, we are really honored that with us, our guest is Dr. Hassan Daud, who has an extensive portfolio, but I will briefly introduce you to him. We are running in CSSPR, University of Lahore, a Young Leaders Program. And we are really grateful to Dr. Hassan Daud for giving us his time of the day. Dr. Hassan Daud is currently serving as the CEO of Khyber Pakhtunkhwa Board of Investment and Trade. He is responsible for facilitating the investors by coordinating with all concerned departments. He also ensures identification of sector-wise potential projects, conducts subsector studies for the preparation of pre-feasibility study and reports. He provides advocacy to facilitate the provincial government on creating and enabling environment for investment through specific investment policy reforms. He holds conferences, seminars, and locally and internationally to attract potential investors. In January 2020, he was assigned additional charge of CEO Khyber Pakhtunkhwa Special Economic Zones Authority. As CEO KP-SEZA, he facilitated signing of concession agreement and development agreement with Chinese enterprise China Road and Bridge Corporation, and helped in establishing special purpose vehicle between the government of KP-SEZA and CRBC. He also developed zone regulations for Rashakai Special Economic Zone. Dr. Daud is also the focal person for Ease of Doing Business initiative of the KP government. Like I said, his profile and portfolio is huge. He actively remains involved as trainer and faculty in various institutions in project management department. And recently, he's been nominated as a focal person for Economic Outreach Initiative of the Government of KP. We are grateful that in his endeavor to enlighten the next generation about Pakistan's true potential, Dr. Daud has taken some time out of his very busy schedule to be with us. Initially, I had invited him to visit the University of Lahore and have on-campus engagement with our faculty, students, and participants of the Young Leaders Program, but perhaps there's another time we'll be able to align our schedules. So without further ado, over to you, Dr. Daud, for your presentation. We'll have a Q&A afterwards with the participants, which I'll moderate. Thank you so much for being with us today. You can share the screen and upload your presentation. Okay, thank you so much. And thank you for that wonderful introduction. But you missed one important thing, that I was the first project director for CPEC since when it started till the time General Asim Bajwa took over in 2019. So that's the reason that I'm presenting this. Yes. And also, it's before I share my presentation, when you mentioned this Young Leaders Forum, I vividly remember a time when our former Prime Minister Benazir came to our university and she wanted to address a similar forum, and I was part of that. I was about to do my master's then, and she said that I want to meet some young leaders, some young student leaders. So immediately, senior most from 50 to 60 faculty members stood out and said, "We are the young leaders," instead of letting us meet the Prime Minister. So I hope all the leaders here are actually young by heart and by age. And I'm so happy. Actually are very young, Dr. Daud. So thank you so much. And it's always so nice. And I follow you and your university's activities. And I'm extremely delighted to be part of this small discussion here. And inshallah, we shall continue to discuss this. Can you see my screen, please? Yes. Brilliant. So first of all, I will build a case for why do we need CPEC. And based on then, I'll give you some factual ground situation because I've been associated with this since it started. When it started in 2013, I was in the embassy.
in China. And at that time, prior it became CPEC, it was Strategic Maritime Cooperation. And then thereafter, from Gwadar, it went into larger scope. And then again, the scope continued to increase. And I'm just coming from a CPEC preparatory meeting for the next Joint Cooperation Committee, and we had this discussion. So somehow I'm more prepared to give this lecture than perhaps yesterday, because today we had this preparatory meeting. Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, it is extremely important for you to realize few things before we talk about CPEC. You know, the world is facing COVID-19 uncertainties, and this is, you know, further compounded by the Russian-Ukraine crisis. And I'm sure Dr. Rabia Akhtar, you know, I follow in terms of you know, her research work on geostrategic and geoeconomic implications and facts. I think she must have gained you well on understanding what I'm going to say in next few bullets. For you to understand also, and that's precisely the reason that I requested her for this lecture, you know, despite the natural endowment that we have, and the ways and means and the discussions that we do and the sort of meetings that we do, we could not actually leverage that because of bitter politics, and bitter politics both in terms of regional and domestic. And Asia, especially South Asia, remains one of the least integrated and cooperative region in the world, with minimal movements of good individuals and investment across the countries. But further important thing for us to realize, and this is more important for us to know, and also the faculty member who are attending this, then perhaps the younger millennials, is that Pakistan is going to be 100 years old in less than 30 years, and its population over 220 million. And for us policy makers, if this does not frighten us and does not give us bad nightmares, what else should? We have to create 1.3 million additional jobs. And when I was making the industrial policy for Khyber Pakhtunkhwa, I had these points in my mind, and the number of working group will grow from 4 million to 5 million by 2020. Also for youngsters, and perhaps for us also, by 2030, China will have 6G, and the speed of decision making, the speed of work, and the nature of work will be 1,000 times faster to what we have now. So for younger generation to know what is coming their way is extremely important. When I represented Pakistan in the BOW Forum, where all think tanks and people come and gather to discuss what should be the future trend of all sectors, including finance, jobs, way of life, they were talking about avatars. They were talking about how digital transformation, AI, robotics will turn around. And perhaps my baby boomers, more and little bit of millennials are not aware of the kind of pressure that is knocking at our door in terms of embracing this technology and embracing this. And I believe that only strong, innovative economy can help address the challenges that I've mentioned earlier in terms of the number of people vying for jobs, the nature of job changing, the population growth, the scarcity of resources, the climate change can only be addressed through an innovative economy. And of course, for generation of economic and business activities, we need to create employment and we need to create industry. We need to work on creating enabling environment which will create the pull factor for bringing in industry. And I personally believe, and I'll tell you why in the following few slides, that CPEC scenario is transforming the country and opening new doors. And just now, as I said, I'm coming from a meeting where we were talking about third-party participation within CPEC. But this will only happen when we create
business environment and enabling environment. Otherwise, we have our competitors in Laos, Cambodia. I've served in Vietnam, I've served in Laos, I've served in China. In 2017, I invited, when I was in the Planning Commission, I invited, not me, but Planning Commission invited Professor Lin Yifu, who is now the Dean at Peking University and is also, at that time, he was the Chief Economist for World Bank and very graciously accepted our invitation and came, and I had the honor of traveling with him for 14 days within Pakistan, looking at sector where we can attract investment. And he said to me, and is written in his book on transformational economics, structural economics, and that's a very popular book in which he's mentioned that 800,000 jobs worth of industry is ready for relocation from China. It can go to Laos, it can go to Vietnam, it can go to India, and it's going there. So unless we create the enabling environment, it's coming to Pakistan also. Not that it's not coming to Pakistan, but the number, the frequency, and the volume need to be increased based on our strategic relation. This is the trend that we will see and look at where we were, where we are, and where we're going to be in 2050. And as I said, if this does not frighten us, what will? I think in terms of production, by looking at this slide, I think we're the biggest factory of producing children. But we should be like China, and I assure you, in my lifetime on this planet, China will remain the factory of the world. It will keep exporting goods and perhaps services also in future. And if we can link ourselves with the supply chain of China. And why is that important? And how will we do that? And I'm a great follower, and I almost have all literature available on Deng Xiaoping in my personal library. And one of his biggest quote, which I highlight everywhere and I admire, is, it does not matter if a cat is black or white. And this is specifically my request to the younger generation, to understand that it does not matter whether the cat is black or white as long as it catches the mice. And it's equally important for you to understand, and for me to understand as someone who's head of the investment attraction body of a subnational, at a subnational level, is an old 5,000 years old saying, Chinese saying, is to attract the phoenix, build the nest first. And naturally, I will keep highlighting such quotes China because my PhD is on the Chinese management and leadership system. My dissertation was comparison of Confucianism with Western ideologies. So I am a big believer on this, and my work style is somehow a reflection of like this. When I was in CPEC, we were able to deliver more projects in 3 years, around 28 billion. In Rashakai, we were able now to be the fastest special economic zone. And this is the kind of productivity we need in our younger generation for them to be competitive and be able to work in a cross-cultural and global environment. Because, Rabia, all your participants are from Pakistan? Yes, all are from Pakistan. So maybe you can be bilingual. It doesn't, okay, suit your needs. So, bachcho, the most important thing that you should know is that three cheezon ki ab boundary nahi rahi. Knowledge ki boundary nahi rahi, because we have this small instrument and little gadgetry available which can give you information about yourself also, like what sort of blood group I have and what sort of physical structure I have. Then there is no boundary for investment, because wherever you create enabling environment, investment will flow. And also the third thing that you should know is that there is no boundary for human resource now. Wherever enabling environment is created, people will move to that place. We move to Middle East, we move to Europe. So inshallah, we will work hard to make sure, and my generation's responsibility is to do that way, is to create an environment jahan par Pakistan becomes a ground where people come and look for jobs, and you work here, create
opportunities for yourself and people working with you. And when I was in charge of the e-commerce council and looking at COVID, I was extremely happy to learn that, even in KP, we were able to export services and goods for around 500 million through e-commerce. And also a lot of female participation is coming. So we have to create ways and means and the kind of regulation which supports investment. The other thing that you need to understand is at this point of time is that China is the largest trading partner with the globe, and second to that is America. China exports and imports from 124 countries, whereas America does this with 56 countries. And if still that does not convince you for CPEC, then look at this. I saw this just recently on social media, so I thought let's discuss this. So second largest economy is China, and it's our neighbor also. We have strategic partnership with China. So why not China in terms of business and trade? And then I'm not a diplomat now, so my discussion will be around business and trade and creating the opportunities for youngsters here. So look at the number of Fortune 500 companies and the number and the growth and surge of these companies in the overall global context. And just look at how China is growing and growing fast. A lot of female entrepreneurs from China are taking lead. And if still this does not convince you why we should have CPEC, if you do not agree to me, agree to Elon Musk, because most of you follow him, youngsters I know. So look what he said. He says that in China, a train station is built in 9 hours by 1,500 workers in China. And China progresses advanced infrastructure is more than 100 times faster than the US. And while this gives you a reason to do trade and business with China, it also be a reason for you to understand, boys and girls, कि आपको किस किस्म का चैलेंज आगे आ रहा है, किस किस्म की प्रोडक्टिविटी लेवल के साथ आपको काम करना होगा. And this is not just China. If you go to Malaysia, if you go to Indonesia and any other country which is our competitor, you will find that the productivity level, their female participation is much higher than what we have. So all of you after, और आज आप जितने क्वेश्चन आपने CPEC पे करने हैं, रीजनल कनेक्टिविटी पे करने हैं, आप करने. But then if you agree, then become the ambassador of creating opportunities for infrastructure development. आप देखें ना कि infrastructure and both hard and soft infrastructure is extremely important. और मैं जिस सूबे में बैठा हूँ वहाँ पर आप जब न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज और भी एक चैलेंज बनता है. एंड आप ये देखें कोविड में एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग कितना बड़ा इशू. ये अदीला आपको ना अपना ये बंद करना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आपकी डिस्टॉर्शन में सुनूंगा, आप मुझे नहीं सुन सकेंगे. थैंक यू. और द अदर थिंग future leaders that you need to understand is कि हम बिल्कुल we lie in the center of 3 engines of growth. We have China, we have the Southeast Asian giants like India and perhaps Bangladesh, because unki bhi economic growth is huge. And then we have this oil producing Central Asian Republic, and if you extend it further, or another partner, Turkey here on our western side. So we lie in the center, and this is God's gifts to us. और इसको leverage करना है इस strategic location को, not just by saying it is strategic, also by making money out of this, making opportunities out of this strategic location. And if we can do that, my generation can give this to your generation, future leaders, and then from there you can work on what you do. And this brings me to Belt and Road Initiative, which is the initiative of President Xi Jinping, the Chinese government. और इसके 5 pillars are extremely important: policy coordination, people-to-people bonding, facilities connectivity, financial integration, and unimpeded trade. Or sometimes हमारा people-to-people bondage, we speak about
Chinese language only and cultural exchanges also. I did 1 year course of Chinese language here in Pakistan, and don't ask me from where. And when I landed in China, I realized that that was all Chinglish. It was neither Chinese, neither English. So when we say, or हमारे जो academic institution, a higher education institution, when we say that we are giving quality language education, I think the quality needs to be at least HSK 3 or HSK 4, so that people can translate, or if they cannot translate, at least understand few technical jargons. Otherwise, ni hao ma se aage baat phir phas jati. So why Belt and Road Initiative? Also, as I said, and you must, as students of history, understand, future leaders, the times are changing and the world is transforming, and Asia is becoming the epicenter of this 21st century transformation. And I think Rabia can brief you better in her following discussion that she'll have with you in the course of your endeavor. But I think this has happened earlier also. We were engrossed in some terrorism, some other issues, but I think this opportunity now we cannot miss. और एक आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है इसकी भी एक साइकिल होती है. लाइक फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ग्रो किया तो from UK it went to United States, and from when वो जब grow किए economically, transition from labor intensive industry to high tech industry to space technology, तो ये transition से फिर वो मुल्क जो के lower tier of industrial growth में होते हैं वो benefit करते हैं, and that benefited when US grew in its industrial development and space technology. Then countries like Indonesia, Korea, Malaysia benefited. And then when those countries, especially Korea, Japan, they grew, and then China realized the importance, and they made sure that their endowment of large population can be used. And thanks to Deng Xiaoping's greater vision, China is now the leader, and it's now stepping up on the industrial ladder. And just today, I think they have launched 4 more satellites to the space. And now this is the opportunity for countries like Pakistan, where there is huge population, India, Bangladesh, Laos, as I said, Cambodia. And after a very, very long time, and please remember before 13th century, and I may be a little wrong, but before that, Asia was the leader, when in the times of Asian Silk Route, China was the leader and exporting to Turkey, where Ottoman Empire was high, and East and West integration had happened through the Asian Silk. But then West grew, brought in new technologies, but now again, the economic decision making is moving from West to East. And if you follow BRICS discussions which had happened a few weeks earlier, you will realize how important middle income countries are becoming. And this per se, they are middle income, like China, like Brazil, like Russia, like India, and also South Africa and their associated partners also. And these economic reasons are now building new regional links and hubs. And I also believe, and I've kept it in red also, that US-China trade war and I'm sorry, let me go back to the previous slide. US-China trade war and COVID is a stimulus to new relocation, because enterprises, especially large size enterprises, are looking at ways to mitigate some of their industrial risk, and from there move to new appointments. And therefore, many countries are putting aggressive new FDI policies, very aggressive. And even in China, in its annual work plan, is looking at outbound FDI. So we need to also work on
our investment strategy. I've crafted 5-year investment strategy for Khyber Pakhtunkhwa, and it's giving us good dividends. We were able to attract a lot of investment, more than perhaps what I was expecting, and also create the kind of narrative for a progressive Khyber Pakhtunkhwa and a growing Khyber Pakhtunkhwa. BRI will reduce travel time, and if there is a seafarer in this discussion, he would realize that how important this saving of time is in terms of its economic numbers. 56 economic zones are coming in 20 countries, but also realize that the two which are being built by China themselves, one of them is in Khyber Pakhtunkhwa, and that's Rashakai, for which I am responsible. I have written on this, and I strongly believe that China-Pakistan Economic Corridor is the buckle of the belt, and that's based on their strategic location and also population. Because आपको ये पता होना चाहिए कि FDI मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, and FDI could be, for market-oriented FDI, where size of the population matter. Technology-driven FDI, where perhaps we are not now, but later, perhaps when our technology companies grow, then we will have that. And then an endowment attracting FDI, where people look at your natural resources और उससे फिर आपको attract करते हैं. So Pakistan has huge potential, and in terms of BRI, I think President Xi has clearly articulated when he said we should be responsible to people's concern and pursue the large interests of all countries and steer global development to a new era. But इसी के साथ मुझे एक और एकदम Chinese एक quote याद आई है, and that's important for us as policy makers and for all academians and people working as students also. That is an old Chinese saying which goes that you do not fit in others' shoes. So we need to look at our indigenous resources. We need to look at our indigenous capacity and then build indigenous policies that support our development. So with this case build, I would now talk about CPEC. There were targets given to us in 2013 in which by 2020 we were supposed to build market cultivation and remove bottlenecks, especially energy scarcity, infrastructure. And I'm glad to say कि वो हमने achieve कर लिया है. Maybe 1 or 2 years lag आया है इसमें, but we have done. The second target is for 2025, where we have to build the special economic zones, जिसमें 9 special economic zones, and I'll speak about this later. इसमें हम थोड़े से slow हैं, maybe a year or 2 COVID की वजह से, perhaps, but I think we are now trying to catch up fast. And the third target is by 2030, जिसके अंदर हमारी optical fiber, submarine cable, and also ML1 railway project should be up and running, inshallah. And इसमें थोड़ा सा time है, हमारे due diligence इसमें हो चुकी है. It's just financing matters which are being discussed. Maybe 1 or 2 years delay हो जाएगा, but that's an 8-year project. So based on what I've said, please realize that CPEC for China can supplement Malacca Strait. और मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, I keep hearing that it's more important for China. It's not more important for China. It's extremely, extremely important for Pakistan, both in terms of linking with the global supply chain, both in terms of developing its infrastructure, both in terms of developing ports, because जब आप economically grow करते हैं, you need more port, both in terms of linkaging with maritime sector, which is an ignored sector, and despite the fact that we have over 1,000 kilometers of coastline, हम उसको नहीं use कर सकते. So this is giving us an opportunity to link us, and it's also connecting us in terms of infrastructure, both through physical and software infrastructure, and transforming us to do projects from G to G to B to B. It is also a game changer in strategic sense, because यहाँ पे special economic zones बन रहे हैं, उसमें third party participation आ रही है, हमारे infrastructure gaps address हो रहे हैं, हमारे optical fiber connectivity के gaps address हो रहे हैं, and this will help us improve our telecommunication, education, agriculture, maritime sectors. Or these sectors are ignored sectors, and through use of technology, even security.
by using new technology, embracing new technologies, we can, leapfrog in the process and develop our economies. और इसके अंदर CPEC के अंदर भी इसका slogan है one corridor, many doors, and we have the trade and market access, we have industrial development, socio-economic development, agriculture modernization, Gwadar oil city and blue economy. It's not just Gwadar development, regional connectivity and third parties participation. And these are accordingly joint cooperation committee. जैसे मैंने आपको कहा कि आज उसकी preparatory meeting थी of the joint cooperation committee meeting. And then we have the joint working groups. इसके अंदर है अभी IT का भी joint working group बन गया है और उसकी पहली meeting I think is in next 1 week time. उसके लिए target set कर लिए गए हैं आज और इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे. These are the factual numbers. बाकी आपको कभी आपको सब 70 billion, कभी आपको 80 billion, कभी 90 billion सुनेंगे, but this is the factual number. And I've included those projects which are on paper right now and they are जिनके MOU sign हुए हैं. इसके अंदर maximum private sector के आप ये देखिए कि 49 billion में से 34 billion private sector investment है, इसलिए debt trap का बिल्कुल issue नहीं है. This number is this number as we speak is the number where debt is, and if we add this also, it's around 13 billion. In terms of employment, आप देख सकते हैं कि एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में 66% are पाकिस्तानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के में 92% are पाकिस्तानी. Then this number infrastructure में naturally हमारा experience बहुत ज़्यादा था. आप Middle East के, we've been working in Middle East. We've developed Middle East for that matter. Infrastructure wise and energy में because coal fired projects के हमारे पास experience नहीं था, so we have looked at now sending more engineers to China and they are now coming back, and perhaps in 2 to 3 years this number will also change in our favor. Energy projects में please याद रखिएगा the total overall MOU wise capacity is 17,000 megawatt, out of which 11,000 priority projects हो रहे हैं and most of them should be completed by 2025. The few actively promoted projects which have been included and they are under pursuance. अभी हमारे पास कुछ balance capacity है and we are looking and talking of where to add these projects. This is a marvel. This is the largest open pit mine and this has the capacity to provide our energy requirement and meet our energy security for over 100 years. 50 years for surely, but I think अगर ये जिस तरह expand हो रहा है इसके ये block 2 है, block 1 के अंदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है and the coal is also better than what we were expecting, number wise and quantity and both quantity wise and quality wise. In infrastructure हमारे 2 projects थे, but for your understanding, this is China's border और I wish कि आपके leadership program and I'm adding to Rabia's task. You must plan a visit to the Chinese border and from there यहाँ पर बुरहान के point पे आके हमारे 3 corridors बनते हैं. The western corridor which links directly to और ये ज़्यादातर हमारे अपनी PSDP से develop हो रहा है, and then the central corridor जो central पंजाब से इसमें ये projects in construction which connects Sindh to Balochistan, Gwadar Basima. And then of course the one project एक motorway का project है इसके अंदर मुल्तान सक्कर और आज हमारी discussion हुई है सक्कर हैदराबाद motorway की. But याद रखिएगा कि एक बात बड़ी clearly कि CPEC is not our public sector development program. It is a stimulus to our development program. हमारा जो overall हमारा जो development program होता है वो PSDP public sector development program या प्रोविंस का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से होता है और जहां पे हमें गैप्स नजर आते हैं अगर हमें जरूरत हो तो हम चाइनीज सपोर्ट लेते हैं या किसी और की सपोर्ट. ये हमारे 2 प्रोजेक्ट्स थे. आप में से KKH की जो रायकोट से थाकोट हवेलिया से थाकोट कंप्लीट हो चुका है, थाकोट से रायकोट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी कनेक्टिविटी विद KKH हो जाएगी एंड ऑल्सो मुल्तान सक्कर का जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है और अब हम सक्कर हैदराबाद की बात करें. More important project for you to know and understand and push and be advocate of is the ML1 project.
ये अराउंड 8 बिलियन का प्रोजेक्ट है और इसके अभी आपकी जो एवरेज स्पीड है इट्स अराउंड 45 फॉर फ्रेट और अराउंड 65 फॉर पैसेंजर। जब ये इंशाल्लाह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी 110 फॉर फ्रेट एंड 150 फॉर पैसेंजर हो जाएगा। सो आप सोच सकते हैं कि द ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट दैट दिस विल हैव in terms of cargo, in terms of tourism, in terms of military transportation and other areas, connectivity wise बहुत ज़्यादा transformation आएगी। और ये आपको with all parts, ये ML1 है which I am just referring to, the black one. We're taking an incremental approach. We're looking at areas जहाँ पे most vulnerable है track, like here आपने अक्सर सुना होगा रोड़ी के पास, और इधर पहले होगा देन एरियाज वेयर वी नीड इमीडिएट सपोर्ट, और उससे फिर आगे हम डिजिटली जाएंगे। देन वी आल्सो बाय द वे हैव द, इट्स नॉट पार्ट ऑफ CPEC, वी हैव ML2, ML3, ML4 है, और आपका entire country inshallah will be regionally connected, and this will connect to Afghanistan, Zaidan in Iran, and here, and of course connecting our ports to the hinterland, and from there connecting to the Central Asian Republic. So huge potential. Naturally infrastructure projects में land acquisition और otherwise challenges होते हैं, वो हम address करते रहते हैं, and as project managers हम देखिए याद रखिएगा आप में से जो भी हैं, in future endeavor also it is not bad to have more risks. जितने भी ज़्यादा risk हो, my teacher used to tell me that having more risk is not bad. Not having a mitigation plan is bad. So we do our SWOT analysis prior to all projects and then develop our mitigation plan, जो risks होते हैं, और उनके against हम development करते हैं, आगे जाते हैं, risk को address करते हैं, अपने mitigation plan को revise करते हैं, और आगे की तरफ उसके impact को देखते हुए आगे, और frequency को देखते हुए आगे की तरफ। There is another project जो कि CPEC के साथ link होगा, that is a CAREC project, Central Asian Republic Economic Corridor. इसकी डिटेल्स में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ये भी आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और मैं जो वाइडर रेलवे आपको दिखाया। और इसी तरह हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है जो कि हम यहाँ पे KP में कर रहे हैं, दैट इज KP-SEZA Economic Corridor. It is around slightly over 50 किलोमीटर कनेक्टिंग पिशावर विद तोरखम बॉर्डर, और इस पे काम शुरू हो गया। और इसकी मतलब इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, connecting it with CPEC and then CAREC has huge value. So आपको जो regional context में जो बात कर रहा था as Harbinger, this is how the overall regional connectivity is happening. Western corridor में हमारा एक challenge बस DA खान जोब का रह गया है, otherwise projects अपने time पर, ये जरा पुराना मतलब है updated नहीं है, लेकिन हमारे काफी projects complete हो गए हैं, और जो आपकी कोस्टल हाईवे है उसको भी फर्दर इम्प्रूव किया जा रहा है, सो दैट इट now coming to the most important aspect of industrial cooperation, from G to G we are now moving towards B to B, जहाँ पर हमारे areas are apparel and home textile, agri and livestock, logistic. मुझे जस्टिन ली नीफू ने कहा था कि अगर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ जो बेड लिनन है ऑफ ऑल दी हॉस्पिटल्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न चाइना भी मीट कर लें तो वो नहीं कर सकते। सो दिस इज द काइंड ऑफ पोटेंशियल वी हैव। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एंड डॉक्टर राबिया and her colleagues will tell you that now that COVID has put some restriction on Chinese movements and otherwise, हमारे पास बहुत अच्छी opportunity है to leverage and attract tourism to Pakistan, Chinese tourism, and perhaps from Central Asia, provide them cheaper, suitable, looking at their tailor-made requirement on what is happening. We are looking through these SEZs for import substitution. We're looking at export-oriented industry. We're looking at labor-intensive industry, जिधर हम direct or indirect jobs create कर सकें. And we're looking at sectors like automobile, iron, steel, textile, IT, and the others that have been electronic. And we have a very good example in Punjab, Hire Ruba ka, where Afridi brothers have done very good in private sector. So learning from their experience, learning from China, we are trying to work on this, and we're crafting incentives which are efficient, performance-based, harmonized with regional
and national investment policies, backloaded and regionally competitive. राबिया, आप मुझे ये बताइए कि जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये in terms of your participants कुछ ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गई in terms of discussion? I can cut it short. No, I think all of this is really useful and it will help them ask just the right questions. So it's entirely up to you. You have time and then we can move to Q&A after this. ठीक. So now my favorite subject of Gwadar Blue Economy. I was part of the committee which was working on Gwadar Master Plan. When we were working, we had Shenzhen as its base model because Shenzhen also developed. It's now the largest per capita wise city of China, and it also grew from a very humble fisherman village, which Gwadar was, and now it's moving there. So Gwadar, and remember, boys and girls, आपको एक चीज बहुत जरूरी है, and I think most of you are from Lahore or from Punjab or maybe North. For sustainable development on land, development across coast and on blue economy is extremely important. अगर आपने ये बात नहीं समझी, तो आप कभी भी economic cycle के अंदर ये economic participation में नहीं आ सकते, because God has given you 1,000+ kilometers of coastline. और अगर आप उस coastline की vast resources, tourism wise, hydrocarbon wise, fishery wise, aquamarine wise, अगर explore नहीं कर सकते तो फिर आप नहीं कर सकते. और आप and also in terms of importing oil and gas, और अभी कराची की port जो है, that's becoming sort of choked, a lot of cargo is moving. Port Qasim is mostly now for energy requirements. So Gwadar meets your requirement as a substitute for Karachi and for exporting fishery. बहुत ही आला fish के products हैं वहाँ पर, including shrimps. I wish you guys can go and visit in your private capacity. Or coastal tourism के huge. I mean, we have these sandy beaches which are nowhere in the world. और उनको अगर हम develop कर लें, उसके इर्द-गिर्द infrastructure develop कर लें, तो I think huge potential. The background में ये तस्वीर लगी हुई है, शेंजन की है, और इसमें हमने जब इसको देखा था, as I said, कि हमने SWOT analysis किया था, हमने देखे थे क्या advantages हैं, क्या constraints हैं, तो इसका vision क्या होना चाहिए, फिर we looked at demands and forecast, and then from there we developed the master plan, और उसको फिर हमने around a certain model develop किया. ये अल्हम्दुलिल्लाह vocational center है, almost complete, इंशाल्लाह इसी साल इसकी inauguration है. This is the port. ये 3 berths हैं. This will go almost to 18 to 19 berths by 2040. Or depth will be 18 meters. So this will be the largest deep sea water port perhaps in the region. This is a 5-star facilitation center. It is better than any 5-star hotel in Pakistan. Perhaps Serena is slightly better in Islamabad. Otherwise, this is और ये हमने 6 महीने में बनाया था. Chinese speed, Pakistani speed मिला के 6 months में हमने ये infrastructure. Then this is, ये अभी Prime Minister गए थे, उन्होंने inaugurate किया. This is the East Bay Expressway. This is the first offshore highway, पानी के ऊपर है, and it connects the port with the coastal highway. और ये 6 lane है और ये complete हो चुके. These are the pictures of this. It has embedded rail, 2 tracks for rail, जो कि अभी नहीं है, और उसके लिए land acquire हो गया है, तो इस पे काम. But this highway is ready and all. इसी तरह हमने इसके फ्यूचरिस्टिक सेक्टोरल ट्रेंड्स को देखा था, इंडस्ट्री को, हैवी, लाइट, फिशरी को, और उससे लॉन्ग मीडियम टर्म्स टारगेट डिटरमिन किए. तो ये मैं इसको जल्दी से स्किप करता हूँ ताकि आप क्वेश्चन आंसर ज्यादा कर सकें. मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन गवादर आर बाय चाइनीज ग्रांट. एक बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर का है, द फ्री जोन. इधर इस वक्त 48 कंपनीज ने चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग के साथ MOU साइन कर दिए. सो लॉट ऑफ एक्टिविटीज इज हैपनिंग इन गवादर. यू हेयर बैड थिंग्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द गुड थिंग्स आल्सो. बट ओवरऑल गवादर एयरपोर्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मार्च में कंप्लीट हो जाएगा और इसका फर्स्ट फेज पे फिर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे. वाटर के इश्यूज थे, बट नाउ इंक्रीमेंटली ये एड्रेस भी किए जा रहे हैं. दिस ईयर वी हैव हैड गुड रेन,
also तो उसके लिए हमारे जो 2 डैम्स हैं जो कि हमने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट से किए. So hopefully water requirements will be met through both desal and also from dams, small dams. This is the Gwadar master plan. ये इसमें कुछ changes naturally आएंगी, but this is how it's being conceived. ये eastern side is for industrial development. The western side is mostly for human consumption. ये गवादर का एयरपोर्ट है जो कि इंशाल्लाह ये वाला पार्ट 2023 तक and gradually आगे भी. It's a beautiful design. I really like it, really. And if you look at from the top, it gives you a crescent look. Very nice. Then we have the socio-economic development part, जिसके अंदर हम agriculture, poverty alleviation को देख रहे हैं. इसमें fast track 1 billion की grant हमें Chinese government ने दी है. Now we working. COVID की वजह से कुछ experts नहीं आ सके थे. Changes, exchange, especially in vocational training and medical treatment में नहीं हो सका. इसमें burn center होंगे हर सूबे के अंदर and we are working on that. Agriculture sector is now becoming the most important sector in CPEC. Now that infrastructure has been completed, and so ML1 and agriculture is taking a lot of, and of course Gwadar is taking a lot of attention. और इसके अंदर हमारी कोशिश है कि cotton, rice, maize, tobacco, cucumber, melons. अभी मैं KP के अंदर हम चाइनीज के साथ रेड चिलीज पे भी काम कर रहे हैं. पंजाब ने अच्छा उस पे काम किया. और इसमें हम फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन्स बना रहे हैं फॉर लाइफ स्टॉक. और इसके जरिए हम जॉइंट, मैं आपके लिए आसान वर्ड ढूंढता हूँ, जॉइंट या को डेवलपमेंट एंड को मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं कि हम उनके साथ मिलके लैंड हमारी हो, ह्यूमन रिसोर्स हमारी हो और मार्केट वो करें और मार्केट एक्वायर भी वो करें. सो ये हम एक जॉइंट वेंचर्स उनके साथ करें, उनकी टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करें और टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर हम आगे लेके जा रहे हैं. लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जिस तरह मैंने कहा कि हम इकोनॉमिक जोन्स 9 इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, ब्लू इकोनॉमी और ग्वादर मास्टर प्लान के तहत उसकी डेवलपमेंट को लेके जाएंगे. रीजनल इंटीग्रेशन थ्रू एन इंटीग्रेटेड अप्रोच हम आगे लेके जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करेंगे. A few challenges also. I've spoken about the opportunities, but challenges is cross-cultural and productivity. मैंने आप लोगों को कहा है, young boys and girls, you need to understand. एक तो I would request you कि जब आपका स्पेयर या यूनिवर्सिटी में vacations आते हैं, so try to learn a second language. This is a widely used practice across the world. So at least 2 languages आपको आनी चाहिए. And then of course developing synergy. CPEC wise, I think across board एक consensus है, and now we building on narrative. Capacity building, जिस तरह मैंने कहा कि हमारी productivity, especially new technologies पे हमें बढ़ानी होगी. And of course digital security, which I mean is कि naturally we have this security apparatus, उसको जरा digital करें so that technology could be used. And last but not the least, creating the enabling environment for attracting investment and meeting the challenges. So this is all from my side. आपकी तरफ से कोई question है, so I'm very happy to answer. Oh, thank you so much, Dr. Hassan Daud. I think it was fascinating. You have covered a lot of ground from start to the current situation, and I'm deeply grateful for such a comprehensive presentation. I will start it off while our participants gather their thoughts. With you in charge, you cannot give a half-cooked presentation. Absolutely, absolutely. I think you're just the right person to ask all the questions and settle all the myths about CPEC out there. So what I'm going to do is I'm going to kick it off with some of the questions that I have, and then I would appreciate, this is for our participants to raise their hands, and I'll come to you one by one. So Dr. Hassan, my first question to you is that, you've talked about some of the challenges. We have heard of the opportunities, but let's talk about the challenges. And we keep hearing these reports that China is not happy with Pakistan. There's a lot of disinformation that has been fed, by design, by those hostile powers working against Pakistan and its development. So how do you look at
disinformation as something that Pakistan needs to take seriously in order to tackle the narrative around CPEC? That's my first question to you. And my second question to you is CPEC insulated from political instability in Pakistan? Can Pakistan, with its current economic health, achieve the 2030 project timelines, given the political instability that we are facing right now and probably going into coming years as well? So please address these two questions, and then I'll take questions from the audience. Thank you. Okay, let me first answer. China is not happy. The narrative around China is not happy. Naturally, as I said, I'm not a diplomat, so I'll answer based on my interaction with the Chinese as the project manager. And since it has all started, so I think for any project, any project that you do which involves any mega project that you do, it has its crests and troughs. You have good times and you have bad times also. And as I said, having risks is not bad. So sometimes, you build around those risks, you develop, and sometimes the speed gets accelerated when the focus is more. Sometimes it is less based on economic condition. So I will not agree with someone saying that China is not happy. I think if we look at BRI as a whole, I think CPEC has done more than any of their corridors. We have been speaking about BRI and CPEC across regions, in all our discussions, irrespective of the government. In terms of investment attraction, it starts with projecting CPEC as a good case scenario where our stakeholders, including our bureaucracy, had attracted in 3 years 28 billion. When I say 3 years, it means it started in 2013. And 2015, we were making MOUs. We were looking at their line of work, how, and also the cultural aspect. And it all started actually in 2015. So, and of course, till now. So, in that respect, I think China makes long, and if you look at any cross-cultural study, you would find Chinese as, in terms of their cognitive ability, making long-term plans. It's not that they make short-lived plans and become happy or sad about it. They make long-term plans and base a lot of wisdom around it, and then once it is articulated, then put a lot of action around it. In our case, we do a lot of planning. In terms of our implementation, sometimes our productivities are challenged, and sometimes we overthink things also. मैं आपको एक बहुत interesting बात बताता हूँ, and Rabia, perhaps you can do a research on this. In 2017, I thought, because I was working on Gwadar, so I thought, let me do a research on narrative around Gwadar. Because, we hear narratives like string of pearls, and then they outlive their life, and then we see death trap that also outlives its life, and new narratives is built, and then you, of course, as team lead, you need to work against those narratives and against the naysayers. And you will always find naysayers in project. आप घर के अंदर यहाँ पे बच्चियां और बच्चे हैं, घर के अंदर खाना भी पका रहे होंगे, तो you will find naysayers जो कहेंगे आज ये क्यों पकाया, कुछ और पका लेते, just for that matter. So, if you look at it as a project, because project is something which has a start and a definite end, like a life cycle. So in life cycle also, you have these crests and troughs, you have good times and bad times. So I think China is happy with the progress that China has made. I was following my friend's Chao Li Chiang's statement just a few days back also, and they're quite happy with the progress CPEC is making, and now also, and earlier also. But naturally, we have to build our narrative of demonstrating that why CPEC is important, yes. BRI is important for regional integration, but why is Pakistan important? We need to showcase that also. And in terms of its financial impact, aajkal the times of deeper than ocean and higher than mountains have been transformed into
economic numbers. So when I present my case for CPEC, I present it around the 4 trillion trade that China does. It imports around 2.4 trillion, it exports around 2 trillion. So I will build my case around not the deeper than ocean and higher than mountain and sweeter than honey. I will build it around the opportunity which is lying next to our borders. So मेरा ख्याल है China खुश है. It is हमारे यहाँ sometimes ऐसा भी होता है कि अगर, and this will grow when B2B will happen, कि अगर किसी ने गलती से, and we have all kinds sort of people, कोई ATM के अंदर जाके कोई चाइनीज ने कुछ गलती से कुछ कर दिया तो वो CPEC पे पूरा एक नैरेटिव बिल्डअप कर दिया जाता. अच्छा, मैं आपको बात बता रहा था कि 2017 I forgot to mention that 2017 में I thought let me do a research on Hambantota. So I did my research on Hambantota, and I was surprised to see that Pakistanis have written and spoken more about Hambantota than the Sri Lankans themselves. So sometimes we are a very emotional nation, and which is very good. But sometimes that emotions are reflected in what we write and hear. So I think हमें थोड़ा सा as a nation long-term understanding होनी चाहिए. You can change your friends, but you cannot change your neighbors. और इस लिहाज से हमें चाइना के साथ अपने relationship, और मैं आपको बताऊं as a student of global trade and investment, इससे ज़्यादा हमारी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि the global second largest economy and vying to become the largest economy is our neighbor. इससे ज़्यादा opportunity पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती. और अगर हम ये भी मिस आउट कर जाएं और ये भी ना समझें और हम छोटी मोटी चीज़ों पे पड़े रहें which are very very trivial in terms of opportunity that it offers, तो फिर ये हो जाए. दूसरी बात, आपने CPEC के projects की perhaps what was the second part? Sorry. It was about political instability and I think आप और मेरी I mean you're younger than me, but overall हमने ये political, especially as project managers who are working on national projects, we look at the vision and the mission. We don't look at the political narrative, and I am amongst those. And this is not to be good, I'm among very few in Pakistan which only has Netflix or has PTV World at their home. So for us, it's always, the grass is always green for us. So us se, and that someone might argue कि ऐसा क्यों है. But as project managers or working on national project, आप सोचें कि अगर nuclear program में लोग इस तरह की स्टेबिलिटी की बात करते तो आज न्यूक्लियर प्रोग्राम ना होता वहां. So for me it is something like that, and perhaps people working on CPEC and both China wise and Pakistan wise are this is part of simply stating this is part of our risk mitigation strategy. I think fair enough. You've tackled. This is the best answer I can give online. Absolutely, you've found your balance in it. So thank you so much for that. So I have a couple of questions from the audience. Is it okay if we take a couple of them together in the interest of time, so that Sure. You get time to answer then collectively as well. So first, Akif, over to you. Kindly please ask your question, and then Saif Awad Bukhari, and then Maz. So we'll take first 3 questions. Please unmute and ask your question. थोड़ा सा काम किया है, लेकिन ये जैसे तो मेरा क्वेश्चन इस्लामाबाद में या KPK में, तो ऐसा को बलोचिस्तान में भी है, या उनकी ये जो अथॉरिटीज हैं इनमें को बलोचिस्तान के जो लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है इसमें, क्योंकि वहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं एजुकेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज है, उसकी वजह से ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा हैं बलोचिस्तान के पीपल लोगों के. तो अभी तो हम सिर्फ चाइना के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इन फ्यूचर हम इसे सेंटर प्रोवाइड करेंगे. तो इसके लिए भी कुछ CPEC में हम कर रहे हैं बलोचिस्तान के लोगों के लिए. All right, thank you. Great question. ऐसा कोई प्रोजेक्ट ग्वादर के अलावा और भी हैं कोई, तो वो काइंडली गाइड करें. Sure, thank you, Akif. Saif Awad Bukhari, over to you.
अस्सलाम वालेकुम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और उस हवाले से मेरे ज़हन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, खास तौर पे फ्यूचर में ये जो आगे अगली 2 दिहाइयां हैं 2025 से ऑनवर्ड आगे, जब दुनिया में एक खुराक के बहरान के खास तौर पे मसाइल पेश आ सकते हैं। तो मैं उस हवाले से ये पूछना चाह रहा था कि जो सीपेक का ये पूरा रूट है जो मुख्तलिफ शाखों से होता हुआ बलूचिस्तान, सिंध और बुरहान में एक वो बनाते हुए जैसे आपने फरमाया और उस तरीके से वो फिर आगे तक जाएगा, तो एज एन एंटरप्रेन्योर और एज उस शहरी के तौर पे या एंटरप्रेन्योर के तौर पे या ऐसे गेट थ्रू के तौर पे कि जिसके थ्रू लॉजिस्टिक ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि ऐसे बिजनेसेस, ऐसी अपॉर्चुनिटीज के वो गेटवे के तौर पे एक्ट करे और उनके थ्रू आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चल रही हो, लॉजिस्टिक ट्रांजैक्शंस हो या बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो या आपकी क्रॉप की ट्रांजैक्शन है, तो ऐसी वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज बनेगी जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए या स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए और कलेक्टिवली एज अ गुड सिटीजन या अपने एक इन्फ्लुएंशियल लीडर्स के लिए, कि फर्ज करें कोई लीडर इन मेकिंग है जो कि यकीनन फिर एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले कर रहा है, साथ खड़ा भी हो रहा है, वो गेटवे की फ्यूचर की स्ट्रेटेजिक आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहा है कि इस पूरे सिनेरियो में एक नेबर चाइना, जिसके बारे में आपने बताया कि वो एक बहुत उसका वहाँ अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो वो कौन सी ऐसी डायरेक्शन और डायमेंशन होंगी फ्यूचर के क्राइसिस के हवाले से कि जहां पर लीडर इन द मेकिंग को या एंटरप्रेन्योर को ज़हन में रखना है कि इस डायरेक्शन में उसको तवज्जो देनी है, इसमें स्केल अप करना है और इसको इस्तेमाल करना है, और वो कौन कौन सी ऐसी सोशियो जियोग्राफिक प्लेसेस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कि जहां पर उसकी तवज्जो खास तौर पे अहम होनी चाहिए। So That's great. next question I'll take from a girl, not a boy. Thank you so much, Dr. Fawad. I don't have any. Okay, I have Maimuna. So over to you, Maimuna. And then we'll get back to the boys later. Assalamu alaikum. Am I audible? Yeah. Yes. Assalamu alaikum, sir. And it was very nice hearing this all from you. My question, it just popped in my mind that whenever these projects are completed, the CPEC and the projects it is having underneath it, so definitely it is going to benefit Pakistan, definitely. But like the already developed, you can say like China, developed powers, China, America, will these projects happening within Pakistan, will they have a significant benefit on the countries like China or America as well? Or maybe, or the benefit is just limited to Pakistan or the regions within Pakistan? I mean, obviously they are developed, they are overdeveloped countries and we are having grants from them. But the projects, when they are done in Pakistan, will they be able to benefit those countries as well? So that's my question. Thank you. That's great. Thank you so much, Maimuna. Over to you, Dr. Daud. Maimuna, there's an old saying, you should be careful what you wish for, it might come true. So ऐसा ना हो कि ये अमेरिका और चाइना इतना तरक्की कर जाएं and as Elon Musk keeps saying, ये मार्स में चले जाएं और हमें दुनिया में धक्के खाने के लिए छोड़ दें. So remember कि आप उसी तरह की विश करें. I wish के CPEC के जरिए चाइना और US की ट्रेड वॉर खत्म हो जाए और वो बहन भाई और भाई भाई बन के अच्छे दुनिया के ग्लोबल सिटीजन्स बन के रह सकें. But I think in politics, I might, Dr. Rabia will correct me, Thucydides principle, or there's some principle where, you know, the less developed countries or less developed power are attracted towards for becoming more. But anyway, besides that point, Maimuna, and I'll answer in the reverse order I've written all the questions. Maimuna, I think agar ye, and this is in reference to all the 3 questions that have been asked. थोड़ी देर के लिए आप imagine करें कि CPEC नहीं है, तो क्या पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी? क्या पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की जो ग्रीवियंसेस हैं उसको एड्रेस नहीं करना? क्या माय कॉलीग जिन्होंने एग्रीकल्चर की बात की, क्या हमने एग्रीकल्चर या फूड सिक्योरिटीज के इश्यूज को एड्रेस नहीं करना? ये पहला तो फंडामेंटली हमने इसका आंसर यस है, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को एड्रेस करना है. और
कोविड ने हमें ये बताया कि वो मुल्क जो के एग्रीकल्चर वाइज स्ट्रॉन्ग थे वो सस्टेन कर सके अपनी इकोनॉमी, और अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर ने ये हमें रिफ्लेक्ट किया कि जितनी भी इंपोर्ट लेड इकोनॉमीज होती हैं वो चैलेंज होती हैं, बिकॉज एक सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन, और उसको रीस्टोर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमें इन सब चीज़ों को एड्रेस करना है। मैं आपसे और आपके थ्रू तमाम लोगों से, और डॉक्टर राबिया चूँकि लीडरशिप लेवल पे शी मीट्स एंड हैव अ से, मेरा ख्याल है कि अभी हमने ना दुनिया के चैंपियन बनना थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और अपने मसाइल का पहले हल ढूंढ लें, which includes food security, जो उन्होंने कहा, climate change, which includes creating opportunities for youngsters, 1.3 million every year, addressing security concerns, addressing other issues. जब हम ये कर लेंगे ना, आप देखें कि एक बात याद रखिए, and this is for all of you, and you can have a discussion on this with Rabia. I'm just stating as a student. इस वक्त जितने भी G7, G20, G8, G5, G2, G6, ये सारे अमीर मुल्क हैं, and it is extremely imperative that we become rich. This is for my opinion. Unless you become rich, you will not have a say in global matters. आपकी economic strength, आपकी flexibility show करती है in terms of taking decisions, और वही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपकी ग्लोबल मैटर्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अगर आपके आंसर को मैं टेलर कर दूं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो आई थिंक CPEC विल मेक अस रिचर, आई बिलीव, एंड परहैप्स विल हेल्प अस स्टे मोर फ्लेक्सिबल इन टेकिंग आवर डिसीजंस एंड सेइंग द राइट थिंग्स एट ग्लोबल फोरम्स, बिकॉज समटाइम्स एज अ पुअरर कंट्री, this is not for all, but overall in the larger context, there are issues. So इस लिहाज से CPEC yes, कि वो हमें in larger context and global matters में, जिसमें अभी हमारा उस तरह नहीं है because of various reasons, शायद हमें और देगा. Yes, as a member country of United Nations, you can go and say, but then as I'm having a tangible influence, I think you need to become richer. And CPEC could be an instrument towards it. एक तो ये आपका आंसर होगा. Now coming to my colleague on agriculture and for entrepreneurial activity, देखिए, जैसा मैंने आपको कहा ना कि मैं जब बाओ फोरम में गया, so I realized कि कितनी opportunities हैं, because मुझे तो टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया नहीं है, और मेरी जो जनरेशन है बेबी बूमर्स की, उनके टेक्नोलॉजी के बारे में, सिमुलेशन और उसके बारे में उसकी एक्सेप्टेंस जरा कम है विज़-अ-वी योर जनरेशन. सो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने अपनी पर यूनिट यील्ड बढ़ानी, और वहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस एग्रीकल्चर सेक्टर, सो आई रियलाइज कि वहां पर राइस क्रॉप होता है. राइस क्रॉप इज अ वाटर लेड क्रॉप ना, तो उसके अंदर बहुत सारा पानी जाता है. So what they do is that on top of the water surface they grow rice, but on the lower roots level they grow shrimps, झींगा. So ऊपर वो पानी roots को support कर रहा होता था, और वो roots के जो shoots होती थी वो feed कर रही होती थी ये ये shrimps को. छोटे size के होते थे naturally, but they use that. फिर आप ये देखें कि ओवरऑल एक चैलेंज मैं आपको एक और बताता हूँ. ये आपने चैलेंज तो एक क्लाइमेट चेंज से, एक और भी मैं आपको बताता हूँ. जो आसूदगी चाइना में आ रही है, उनकी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रो कर रहा है, और ये आपके वो जो उनके स्टेपल फूड आइटम्स हैं वो आप, मुझे याद है जब वी वर ऑफ योर एज, एटलीस्ट आई वाज ऑफ योर एज, तो उस वक्त ये धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन मुफ्त दे दिया करते थे. अब चूंकि इट इज कंज्यूम्ड बाय चाइना विच इज एट आवर नेबर, तो ये is for a farmer is a huge opportunity, and I'm so happy that this opportunity is coming for farmer, which is a neglected हमारी जो workforce है उसमें neglected in terms of the cost of their work बहुत कम है.
एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए वो सेक्टर्स जहां पर हमारा पानी, क्योंकि आगे नजर आ रहा है कि स्केसिटी ऑफ वाटर एक इशू बनने जा रहा है, ग्लोबल इशू। तो हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो HP या PH वैल्यू जो लैंड की है वो बहुत अच्छी है। हमारे इवन DI खान के अंदर जमीन बहुत अच्छी है फॉर सर्टेन क्रॉप्स, शुगर केन हो गया, इवन कॉटन, और ये हमने रिसर्च की है। कॉर्पोरेट फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग दोनों को प्रमोट करने की हमें जरूरत है एट एन एंटरप्रेन्योरियल लेवल। आपने एक लार्ज साइज फार्मर बनने की कोशिश ना करें, आप और आजकल तो एक छोटी जगह पे आप मुख्तलिफ क्रॉप्स थ्रू ग्रीन फार्मिंग ग्रो कर सकते हैं। सो आप शेड्स करें, और इसके लिए इवन KP के अंदर 2 करोड़ तक हम लोन देते हैं इंटरेस्ट फ्री थ्रू आवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच आई क्राफ्टेड। तो आप आइडेंटिफाई करें कि, क्योंकि लोन, आई एम नॉट प्रमोटिंग लोन, बट ये बिजनेस साइकिल तो आपने डेवलप करना हो। हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि इनेबलिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करें और लोन्स और एक्सेस टू फाइनेंस क्रिएट करें। और आप लोगों ने अपनी मेहनत डालनी है उसके लिए, हार्ड वर्क, टॉयल, और थोड़ी सी लर्न करें। आप में से कितने लोग चाइना को स्टडी करते हैं? आप मेरे घर की लाइब्रेरी में आइएगा, मैं आपको बताऊं पूरा एक कमरा सिर्फ चाइनीज लिटरेचर पे है, कल्चरल, बिजनेस वाइज। मैंने जैक मा के बारे में जो किताब आती है मैं जरूर खरीदता। And that's not because I want to become Jack Ma, it's because you learn, and also in my age it's important to unlearn also. So learn and unlearn की आप दोनों चीजें करते हैं। तो आपने एक तो अनलर्न करनी है वो पुरानी जो ह्यूमन मैनकाइंड से शुरू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उनको खत्म करके मॉडर्न प्रैक्टिसेस में जाना है, जिसमें CPEC के थ्रू हम हेल्प ला रहे हैं। दूसरा, आपने डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर्स बनाने हैं छोटे, आपने नहीं, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज क्रिएट करें, एंटरप्रेन्योर्स आए वहां पर और वहां पर वो लर्न करें बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और फिर जाके अपने छोटे फार्म्स को क्रिएट करें। और बहुत सारे मुझे लोग कहते थे एक जमाने में 2015 से लेके 17 तक ये नैरेटिव रहा कि हम तो सिर्फ टायर शॉप्स बनाएंगे अक्रॉस द रोड। और मैं आपको बताऊं कि अच्छी टायर शॉप से भी आप बहुत पैसे जनरेट कर सकते हैं एट एन एंटरप्रेन्योरियल लेवल। आप टक शॉप से बहुत अच्छे जनरेट कर सकते हैं। नेचुरली आप में से बहुत सारे लोग डिफरेंट टीयर्स में होते हैं ना, इसके टीयर एक स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ थ्रू देयर एजुकेशन जो कि आप लोग माशाल्लाह ले रहे हैं, उस एजुकेशन में आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ती है। लेकिन प्लीज अपनी नीश क्रिएट करने की कोशिश करें, ये जैक ऑफ ऑल बनने की कोशिश ना करें। एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात ना करें, आप कहें जी कि मैं राइस में जाना चाहता हूँ, मैं से और सस्ते वाला ये चिलीज में जाना चाहता हूँ, क्यूकम्बर की ग्रोथ में जाना चाहता हूँ जो कि चाइनीज की लार्ज साइज है, कैरेट्स हो गए, पोटैटो जिसकी इतनी मार्केट अब तो पाकिस्तान में हो गई है, आई थिंक ये फास्ट फूड के आने के बाद, और हमें बहुत रिक्वायरमेंट है हाई एंड यील्ड की। तो हमने ये काम करना है कि हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है गवर्नमेंट में, हमने आइडेंटिफाई करने एरियाज, और आपने ये काम करना है कि उसमें अपने हार्डवर्क और नॉलेज को डालना। ये दोनों चीजें जब इकट्ठी हो जाएंगी तो आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज और बहुत सारी हो रही है। मैं आपको बताऊं, आप अपनी मार्केट देख लें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और इसकी पूरी सप्लाई चेन को स्टडी कर लें। अब आप देखें कि आपकी मार्केट्स में, और लाहौर में आप लोग सब पढ़े हैं ना, व्हेन आई ट्रैवल लाहौर, तो अभी एक जमाना था, मैं उसको बताता हूँ, लेकिन जस्ट अभी आप देखें कि स्ट्रॉबेरी और चेरीज कितनी आ गई हैं आपकी मार्केट में और कितनी लो कॉस्ट में आ गई। ये इसलिए कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी जनरेट हुई है, चाइनीज मार्केट भी एक्सेस हुआ है, नई टेक्नोलॉजी लगाई गई है, उसकी वजह से यील्ड बढ़ी है, और फोकस गवर्नमेंट का स्ट्रॉबेरी पे, और अभी जिस तरह ऑलिव का है यहाँ पर, अभी आप देखेंगे अगले 3-4 साल में ऑलिव की कितनी आपके पास चीप प्रोडक्ट आनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एज गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि मुझे ये जामुन बहुत पसंद है। सो केपी में जामुन नहीं आते थे टिल लास्ट ईयर, और दिस ईयर आई सॉ लॉट ऑफ जामुन कमिंग इन केपी। So somebody is working on the supply chain, or I'm so happy for that. So somebody is working on that supply chain. Somebody is increasing the product which is reaching to our doorstep. अभी आप देखते हैं कि बहुत सारा आपका आम एक्सपोर्ट हो जाता है। So somebody is working at an entrepreneur. ये सिर्फ लार्ज साइज एग्रीकल्चर सेक्टर के बड़े बिजनेस कम्युनिटी नहीं है,
middle income. I know some of my students from university here in Islamabad, girls are working on livestock. अब वो अफगानिस्तान से goats, sheep मंगाते थे before COVID, और यहाँ पर ईद पे वो export करते हैं. And I'm talking about my young girl students. So this is happening, and this can happen faster अगर थोड़ा सा हमारी तरफ से as a government ज़्यादा focus approach towards entrepreneur. और अभी है, I can fairly say this. Third question, sir, आपका, I'm sorry I'm taking longish time, but उसमें मैं बहुत सारे लोगों के answer address करने की कोशिश करूँगा. Is the deprivation that we have perhaps in Balochistan. देखिए बात सुने, again, सोचिए कि अगर CPEC ना होता तो आपने जो वहाँ पर दूध की नहरें बहाई हुई हैं और खजाने और शीरीनी के जो महफिलें लगी हैं वो नहीं है ना यार. वहाँ पे लोगों के इश्यूज हैं, वाटर, maritime sector, fishery. So we should be happy that CPEC is, first of all, telling us that yes, there is a huge market. There was an article in 2019 in Dawn, it was published in China Daily and then reflected in Dawn, in which it was written, fish of Gwadar sold in a Rumchi. आप Google करके ये देख सकते हैं. और इस वक्त Rumchi में huge market है of shrimps of Gwadar because they are very good, high quality, and I eat a lot of fish products, तो मुझे पता है. लार्ज साइज उसको जंबू प्रॉन कहते हैं. आपके अभी, और आप खुद देख लीजिए, आप में से कितने लोग पहले फिश फिश प्रोडक्ट्स को खाते थे. हम तो चिकन और गोश्त से बाहर नहीं आते. बट नाउ लॉट ऑफ अस गो एंड ईट फिश प्रोडक्ट्स in our congregations outside. हमारी शादियों में भी इवन फिश आ गया है बहुत ज्यादा. पहले ये नहीं होता था, सिर्फ गोश्त और चिकन होता था. So this is the kind of impact that it is creating. जो grievances हैं वो हम बेसिक उनकी जो यूटिलिटीज है, बिजली देखें, अभी वहाँ पे इशू है ना, पूरी लसबेला डिस्ट्रिक्ट के लिए 100 मेगावाट ईरान से आता है. सो आई थिंक ये 300 मेगावाट का CPEC का जो प्रोजेक्ट है जो अप्रूव है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने जाके उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी की है, तो वो जब हो जाएगा तो ये एक रेवोल्यूशन लाएगा पूरे लसबेला डिस्ट्रिक्ट, नॉट जस्ट फॉर गवादर. फिर एक अभी PSGP में प्रोजेक्ट हुआ है जो कि नेशनल ग्रिड के साथ उसको कनेक्ट कर रहा है गवादर को. तो ये भी एक बहुत बड़ी चेंज होगी बिकॉज यू नीड इलेक्ट्रिसिटी टू हैव प्रोजेक्ट्स. और ये जो मैंने आपको कहा डीसेल प्लांट्स वाटर के हैं, ये भी इंशाल्लाह आपके पानी के इश्यूज को एड्रेस कर लेंगे. और मैरीटाइम सेक्टर CPEC और नॉट CPEC आपने ग्रो करना है. अगर आप नहीं ग्रो करते तो आपको मतलब दिस हिस्ट्री विल नॉट फॉरगिव अस एक्चुअली. हमारा मैरीटाइम सेक्टर इतना ह्यूज पोटेंशियल है. हमारी एक शिपिंग कंपनी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी. हमारे ना वो, और आपकी बनाई हुई बोट्स, मैं अभी हैरान रह गया. आई वाज इन दुबई फॉर एक्सपो, और वहां पर ये जो दुबई के अंदर, सम ऑफ यू बीन टू दुबई और लिव इन दुबई, आप देखेंगे कि बहुत सारे बलूचिस्तान के लोगों का वहां पर इन्वेस्टमेंट है इन दी. ये जो टूर नहीं कराते, बोट टूर कराते हैं, वो मोस्ट ऑफ द वुडन बोट्स आर मेड इन गवादर एंड दे बीन ऑपरेटेड बाय आवर लोकल पाकिस्तानी एंड KP गाइस. सो आई थिंक ये सेक्टर आइडेंटिफाई करें और इसके जरिए फास्ट करें थोड़ी सी डेवलपमेंट को. और उसके लिए सबसे मेजर प्रोजेक्ट जो इस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान रहना चाहिए और बिल्कुल नहीं हटना चाहिए इज इलेक्ट्रिसिटी. Thank you so much, Dr. Daud. I think you've covered a lot of ground, for the prospective hands that are already, raised. But in the interest of time, and I should tell everybody that this is, today is Dr. Hassan Daud's birthday as well. So we should keep him away from his family for too long. Evening is approaching us. So I'll just collect these last 4 questions, and then, if there is a repetition, you can ignore that. And if there are some new questions, please address those. Over to you, Maz. Thank you, Dr. Abia. Assalamu alaikum, Dr. Hassan. Dr. Daud, sorry. Dr. Daud, मैं कुछ हिस्ट्री का भी तालिब इल्म हूँ, बुक्स कंसल्ट करता हूँ, पढ़ी है. तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन है कि ये CPEC क्या ईस्ट इंडिया कंपनी बन सकता है इन कमिंग डेज? तो बड़ा एक, जिस तरह वसीम बदामी कहता है ना अपने प्रोग्राम में, कि मासूमाना क्वेश्चन है. थैंक यू सो मच डॉक्टर. देखिए, अगर आप निकम्मे होंगे ना. If you could allow me, can we collect questions? Over to you, Mubashir. Thank you. Thank you so much, Dr. Daud. I think you've covered a lot of ground, for the prospective hands that are already, working on livestock. But in the interest of time, and I should tell everybody that this is, today is Dr. Hassan Daud's birthday as well. So we should keep him away from his family for too long. If there is a repetition, you can ignore that. And if there are some new questions, please address those. Over to you, Mubashir.
Assalamualaikum, sir. Thank you for such an interesting session. I'm a researcher at the Research Society of International Law, where one of the programs I work at is a project on regional trade. We basically look at the legislative aspects of regional connectivity. Sir, मेरे दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं. I hope Dr. Rabia doesn't get too annoyed कि मैं multiple questions पूछ रहा हूँ. Sir, firstly, how can we use CPEC? You can send her a gift later to please her. Yes, sir, definitely. So firstly, how can we use CPEC to transform from essentially a service provider to a product-based economy? Especially we look in the IT sector, हम बाहर की companies को services provide करते रहते हैं, हम उन्हीं के products को rehash करते रहते हैं. Uber का नया version बना लेंगे, Food Panda का नया version बना लेंगे, but we don't really create new products. और in this regard, borrowing from what you said, how do we change this mindset? आपने agriculture की बात की. Indians use a technique called the system of rice intensification, SRI, which is a very low water intensive method of rice cultivation. I've tried telling the people in my village to transition to that, लेकिन मेरे वाले साहब के अलावा कोई भी नहीं सुनता उस बात को, वो भी बड़ी मुश्किल से सुनते हैं. So ये mindset हम किस तरह change करें? Secondly, sir, आपने अपनी presentation में कहा था कि this is an opportunity we cannot miss. If you allow me to be skeptical for a second, अभी recently India ने cargo Moscow से India तक आया था through Chabahar. Do you think we've missed the boat with in that regard? हम जब internal अपनी politics में पड़े हुए हैं, India ने और ईरान ने चाबहार use करके already transit trade शुरू कर दिया. Lastly, sir, recently Asian Development Bank की report आई थी on trade corridor development, and one of the things which they said was कि trade corridors के through आपकी internal domestic development भी होती है. But in Pakistan we have a very long history of inequitable and extractive modes of development. Case in point, आप सुई देख लें जहाँ पे local stakeholders don't benefit as much, even though वहाँ से हम सारे resources निकाल रहे हैं. यहाँ पे and you know, it's the same business entities and the same faces who keep benefiting from such initiatives. आपने opportunities for entrepreneurs की भी बात की. अभी आप recently बड़ा एक push आ रहा था कि जी on resuming trade with India. We did a data based analysis of this कि पाकिस्तान का India के साथ trade कैसा है, who gets to benefit from it. And one of the businessmen who was pushing this narrative a lot, उनका सीमेंट का काफी ज्यादा ट्रेड है, क्योंकि अगर उसके अलावा विद इंडिया सो एक्सपोर्टेड, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान का बहुत नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड बनता है विद इंडिया. Also this creates a security concern because local population में एक discontent आ जाता है, which अगर हम strategic point से देखें, they are more likely to be pushed towards insurgency. हमने recently देखा कि Chinese teachers were targeted. मुझे भी गिफ्ट भेजना पड़ेगा. Sir, but sir, I'm just wrapping this up. And so we recently saw that Chinese teachers were targeted by the BLA. In this regard, because you work with the CPEC, what are we doing to ensure that Baloch people also benefit from all CPEC related activities? Thank you so much. Thank you, Mubashir. Sorry, Dr. Mubashir, I'll need to have you over in Lahore. Have a one-to-one, with Dr. Daud. Too many questions, but all great ones. Rabia and Fazal, please be very concise in your questions, and these are the last two I'll take. Please, over to you, Rabia. Thank you so much for taking my question. Assalamu alaikum. It was a great presentation from your side, Dr. Hassan, and we covered all the benefits of CPEC. You ask a great question now. I was like eager to ask you that everything has advantages as well as disadvantages. So we have covered all the benefits of CPEC to Pakistan as well as China. So my question is that what are the risks of CPEC? What are the disadvantages that we'll face for Pakistan as well as China? Thank you so much. This is a brilliant question. Last question, Fazal. Be brief. I can't hear you, Fazal. I'm audible, madam. Yes. Hello, I'm audible, madam. Ji, sir. Thank you, Dr. Abha. One brief comment and followed by a short question. Sir, keeping in view of political scenario and Baloch nationalist grievances on the promotion of CPEC, blur the distinction between political strategy and commercial interest, demonstrating that the regional other major players such like India, which might try to contain CPEC and provoking Pakistan and trapping the two nations in traditional hostility and losing focus on economic development. My short question is that do you think that the economic side factor consisting of tariff and non-tariff barrier
to the extent of local industry. Second, physical connectivity, asymmetric power relation, and security concern have served as obstacle to achieve regional integration in South Asia through CPEC. Please enlighten in this regard. Thank you, sir. Okay, Thank you so much. Over to you. So quickly, first of all, on Chabahar, देखिए, मुबशिर, प्लीज याद रखिएगा that this is your right. जिस तरह मैं अपने एक दोस्त को कहा करता था कि ये तुम्हारा राइट है कि तुम समझो कि तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन ये तुम्हारा राइट बिल्कुल नहीं है कि तुम समझो कि दूसरे बेवकूफ। तो इसी तरह ये आपका राइट है कि आप डेवलप करें, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट कि आप दूसरों को रोक दें कि वो डेवलप ना करें। This is their naturally given right to develop and look at opportunities. But I have been to Chabahar, so I can tell you that Gwadar is far better and far safer than what Chabahar offers. And also, naturally, unka infrastructure zara better hai. Naturally, they have these oil resources which they can spend on development. But हमारा Gwadar इतनी बुरी हालत में या इतना less lucrative in terms of its investment potential nahi hai. So I think we should, while we look at others developing, while we look at how China and Iran and China, India, or India, Iran and Russia and India or other countries are growing and creating possibilities of integration, we should look at our own potential and endowment and then try to leverage from that. अगर हम वो कर लेंगे तो बाकियों को देखने की हमें जरूरत नहीं है। और जिस तरह आप उनको देख रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप अभी सोशल मीडिया में चले जाएं और अगर ये इसको ओपन कर दें तो 6 आपके एडवर्सरीज आके इसके अंदर इस डिस्कशन को खराब कर रहे होते। और शुरू में जब जूम आया था तो होता। सो जब हमारी तरक्की भी उनके लिए ऐसे ही है जैसे आपकी डिस्कशन से ही है। सो बट दैट्स ह्यूमंस राइट ऑफ, जब हमने गवादर के मास्टर प्लान, we looked at Jabal Ali, we looked at Salala, we looked at Gwadar. As I said, we were developing on Shenzhen. So we found के खुदा ने हमें वो सब कुछ दे दिया है जिसकी हमें, it's just our effort, ability, progressive planning, pragmatic planning, and then putting a lot of hard work, sustainable hard work to that. And अगर आप ये कर सकेंगे तो फिर Chabahar, and I have written a lot of papers on this, on the potential that Chabahar and Gwadar as sister ports offer. अगर आपका ये जिस तरह ये लैंड बेस्ड आपकी टूरिज्म होती है, आप इमेजिन तो करें कितने लोग जाते हैं, और उसके लिए सिक्योरिटी अपरेटस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अगर शिप्स पे जाने लग जाए, जैसे एक जमाने में हज पे जाया करते थे, तो you can save a lot of money and people can have lot of enjoyment while going there and make a lot of money also. The maritime sector can make a lot of money. So I think हमें ये देखना चाहिए कि Chabahar हमारी Gwadar के potential को कैसे supplement करता है, instead of, and this is me, I mean you don't have to agree, I'm giving you my perspective and standpoint. So हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे Chabahar को support करते हैं और Chabahar हमें support कैसे करता है, वहाँ के ships यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, हमारे शिप्स वहां पे कैसे जा सकते हैं, और हम जो शिपिंग लाइंस एमिनेट करती हैं, स्लॉग्स जो सी I've lost Dr. Hassan's voice. Just a second, yes, I'm back. So electricity का issue. So जो seafarer है, जो कि 10 दिन के voyage के बाद आया है, तो उसको एक अच्छी facilitation center, एक अच्छे recreation center, एक अच्छा शहर चाहिए. So the Gwadar is being developed that way. Chabahar as a city is better developed. I would agree that. But I think as a port, we are much, much better and we offer a lot of potential vis-a-vis that. तो ये हमारे लिए issue नहीं है. जहाँ तक creating new product है, तो I think we should learn from China in that. कि कैसे, and also look at how industrial development grows. You don't have to create new products and you don't have to do out of box thinking for creating. Sometimes आप ये देखें ना कि आपके
एप्पल के या एप्पल प्रोडक्ट्स हैं उसके कितने कवर्स, उनकी कितनी चिप्स चाइना में बनती हैं। तो वो ये कह सकते हैं यार कि क्या रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो चाइना, और चाइना इज बीइंग क्वेश्चन फॉर दैट। तो WTO का फायदा आप भी उठा लेना, आप यहाँ पर प्लास्टिक के कवर बनाना शुरू कर दें, उनके चार्जिंग पॉइंट्स बनाना शुरू कर दें, जो कि बहुत चीप वर्क है और बहुत आसानी से एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। आप ये देखें कि आप नए प्रोडक्ट्स क्यों, ठीक है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, बट आई एम जस्ट टॉकिंग इन द लार्जर फ्रेमवर्क, एक इकोनॉमिक साइकिल ग्रोथ। क्या इथियोपिया ने नए किस्म के जूते बनाने शुरू कर दिए हैं जो कि उल्टे इंसानों को चलाते हैं? Now Ethiopia is the factory of the world for shoes and they are only exporting to China. What they are exporting is what world wants. और चाइनीज फैक्ट्रीज वहां पे लगा दी हैं, वो जूते वही जो यहाँ पर आते हैं वो सारे इथियोपिया में बनकर आते हैं। तो आप भी ऐसा काम करें कि आप नए प्रोडक्ट्स के लिए जरूर क्वेस्ट में रहें, लेकिन आपके देखें आपकी जो एजुकेशन क्वालिटी अर्बन सेंटर में वो रूरल सेंटर में नहीं है, तो क्या आपने वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं लानी, क्या वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं लानी? तो आपने ऐसे एक स्ट्रक्चर ग्रोथ लानी है जिसमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो पहले आप डेवलप कर सकें वो ले आए, जब वो डेवलप हो जाए तो नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएं जो टेक्निकल और हाई एंड हो। इस वक्त तो आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है ना। हम अक्सर कहते हैं कि हम फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, जब हम कहते हैं अच्छा एक्सपोर्ट करो तो कुछ निकलता नहीं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू मैंगोज एंड परहैप्स ऑरेंजेस एंड सम चेरीज ना, बाकी अदरवाइज तो आपका प्रोडक्ट ही नहीं होता एक्सपोर्ट करना। सो वी शुड एज आई सेड बी केयरफुल इन व्हाट वी विश फॉर। तो हमें एट दिस पॉइंट हमें नए प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए और उसके लिए एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करनी चाहिए AI रोबोटिक्स में और अदर एरियाज में। लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग रूरल सेक्टर ह्यूमन रिसोर्स है उसको आपको ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, शू मेकिंग इंडस्ट्री है, कारपेट्स हैं, इनकी तरफ और लेके जाना चाहिए, बिकॉज इनकी भी ह्यूज मार्केट अवेलेबल है चाइना के अंदर। सो जो प्रोडक्ट्स इन मार्केट है और इसके लिए लेबर 100 टाइम्स हमसे महंगी है चाइना में इस वक्त एज वी स्पीक, इट कैन ग्रो मोर, तो इसका फायदा उठा लें। जिस तरह क्या वियतनाम कौन सा नया प्रोडक्ट बना रहा है, आप थाईलैंड कौन सा नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही गोल्फ के शूज अब सबसे सस्ते वहां मिलते हैं, ऑल गोल्फ प्लेइंग पीपल मेक इट अ पॉइंट कि थाईलैंड में रुके, देयर अदर रीजंस आल्सो, बट वहां पे शूज खरीदने के लिए रुकते हैं एंड यू नो बाय गोल्फ शूज एंड गोल्फ स्टफ एंड देन गो, बिकॉज वही कंपनीज हैं, वही ब्रांड्स हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बिग ब्रांड्स नाइकी, स्लेजेंजर और अभी बहुत सारे आ भी रहे, इनको लाएं यहाँ पर, अपनी उनकी लोकल कंजम्पशन भी रखें और उनको एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री की तरफ लेके जाए। डिसएडवांटेज, अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्वेश्चन आया था एंड समहाउ मुबशर's क्वेश्चन इज आल्सो समहाउ रिलेटेड टू दैट आल्सो। देखिए ये जो फिक्र है ना, ये निकम्मी कौमों की फिक्र हो सकती, ये मेरी फिक्र नहीं है ईस्ट इंडिया, बिकॉज आई नो माई स्ट्रेंथ्स, आई नो माई वीकनेसेस आल्सो। ये वो कौमें इस तरह की बातें करती हैं जो निकम्मी और डरपोक होती हैं, और हम ना निकम्मे हैं ना डरपोक है। प्रोडक्टिविटी का इशू है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप मुझे बताएं ना कि 5000 साल ये नोन हिस्ट्री ऑफ चाइना, चाइना ने किसी मुल्क पे अटैक नहीं किया, बल्कि उस पर जापान ने अटैक किया, रशिया ने किया, ओपियम वॉर में ब्रिट्स ने किया, यू नो ट्रेड वॉर में और मुल्क ने किया। एक दिन में 1.5 लाख आदमी नैनजिंग में मारा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं। तो अभी क्यों? वो बिकॉज दे फॉलो कन्फ्यूशियस प्रिंसिपल, और कन्फ्यूशियस प्रिंसिपल्स बिलीव ऑन हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोथ। वो ये कहते हैं कि उस चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में चोंगको कहते हैं, चोंगको, चोंगको मीन्स सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। सो वो ये कहते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, इधर लोग आए एज अपोज टू हम बाहर थे, और वो उसको समझते हैं कि ये जन्नत है, एवरीथिंग अंडर द हेवन इज इन चाइना, दे डोंट नीड एनीथिंग टू गो बियॉन्ड। आप ये देखें ना, उन्होंने इतनी पॉपुलेशन होते हुए मंगोल्स पे अटैक नहीं किया, मंगोल्स उन पे बार बार आते थे, और उन्होंने क्या किया, ग्रेट वॉल बना ली बस। सो दिस इज द काइंड ऑफ यू नो डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट है। तो हमें उनकी इस फिक्र में नहीं पड़ना चाहिए, अनलेस कि हम डरपोक हैं और हम समझते हमें अपनी एबिलिटीज पे शक है तो हम कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी। देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पॉलिटिकल एजेंडा था, इनका सीपेक का एज ऑफ नाउ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। उनका यस
ट्रेड वाइज एजेंडा है, यस, और वो इसलिए क्योंकि उनकी ट्रेड ही उनका सर्वाइवल है। जितनी कनेक्टिविटी वो ट्रेड वाइज रखेंगे विद अस एंड विद यूरोप एंड विद यूरो एशिया, वो उनका सर्वाइवल है, उनकी इकोनॉमी है। अभी ईयर ऑन ईयर 2 क्वार्टर उनका लॉस हुआ है ना, बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन इन शंघाई एंड बीजिंग ओनली 2 cities। तो उनको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हम पे करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें किसी पे करने की जरूरत है। हमें उनको भी अमीर बनने का ख्वाहिश है, और हमें भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए, जो कि नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी और बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। I think we should, and let's keep religion out of this discussion, and which is a important part of our life and upbringing, but it's important. नमाज AC की मस्जिद में पढ़ी जाए तो उसका अपना ही मजा होता है यार। So let's become rich to do our religious proceedings in a better environment, all I can say. And last question was regarding the trade barriers. And I see Aruj here also. And I did a research on FTA recently, on China-Pakistan FTA too. TDAP gave me a task to do this. लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आपने अगर तरक्की करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना को बोले यार तुम 10 साल बिल्कुल कुछ नहीं करना, रुक जाओ, और हम जरा 10 साल आहिस्ता आहिस्ता कछुए की स्पीड पे चलते हैं, और फिर ये नहीं हो सकता। सो FTA 2 जब हम बात करते हैं, या ट्रेड एग्रीमेंट्स या बायलैटरल बिट्स की हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की बात करते हैं, सो प्लीज रिमेंबर कि आप अपनी नेशनल एजेंडा और नेशनल पॉलिटिक्स और नेशनल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ये क्राफ्ट करना है। आप कहते तो है कि FTA 2 से या FTA विद चाइना से आपको फायदा नहीं हुआ, लेकिन आपने फायदा उठाने की भी तो कोशिश नहीं की ना। आप वो इंडस्ट्री लगाते जो FTA के अंदर आइडेंटिफाइड है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डेवलप करते जो FTA के अंदर आइडेंटिफाइड है। 0 टैरिफ दिया हुआ है आपको चाइना पे, तो अभी FTA में फायदा उठाना। 5 साल तो 0 था हमारी तरफ, चाइना की तरफ तो था ही नहीं। सो ये ट्रेड बैरियर्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन दूसरे को भी तो देते हैं ना। और अगर दूसरा इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाता है तो उसको ब्लेम ना करें, आप अपनी गलतियों को करें। प्लीज रिमेंबर, वी विल, and as great Jen Shopping said, we will cross this river by touching each pebble. So have an incremental approach. Don't go a sixer approach on every ball. You have to have sometimes, हमें ना, and I am a big proponent of taking singles in cricket. हमें आदत पड़ गई छिक्के मार के मैच जीतने की। 2020 अप्रोच नहीं होती in economics and in business. It has to have, हाँ लॉटरी निकल है तो yes, but it is not lottery. There's no shortcut to business, remember, and to trade and opportunity. So with this, I end my discussion. Thank you, Rabia, for giving me opportunity. Fantastic questions, brilliant, and maybe I have missed those. मैंने पूरे कागज में इस तरह haphazardly लिखता रहा। और Balochistan wise, I think CPEC or no CPEC, we have to address their grievances, and there are simple ways: provide bijli, provide water, and provide security. और आप याद रखिए ना, आप देखें, अगर स्टडी कर लें आप, राबिया इनको रिसर्च दीजिएगा। एक बहुत पुरानी चाइनीज सेइंग है, and I keep referring to that also. If you want to become rich, build roads, and road means infrastructure. So अगर आप देख लें कि आपने ग्वादर टू तुर्बत रोड बनाई है तो वहां पे क्या सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया। तो जब आप रोड्स बनाते जाएंगे, एक तो लोगों को फार्म टू मार्केट एक्सेस होगा, बच्चियों को और बच्चों को और लोगों को, बुजुर्गों को हॉस्पिटल का एक्सेस होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज होगी। लेकिन जब आप एंटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपेन करेंगे और नैरेटिव बिल्ड करेंगे तो फिर नहीं होगा। सो फाइंड अपॉर्चुनिटीज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इसके लिए आप और कोई भी अगर आपको इसके अगेंस्ट नैरेटिव देता है, उस विद इन योर फैमिली, विद इन योर लार्जर डिस्कशन पॉइंट्स, उसको डिस्करेज करें और इनकरेज करें कि किस तरह हमें इंटरनेट, मॉडर्निटी और अपॉर्चुनिटीज एक्वायर करनी। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Hassan. I've always followed your work and have been really inspired by how passionate you are about, CPEC and the projects, and how you want a positive narrative to be built around it based on the reality.
which is Pakistan's own reality, which we miss sometimes. But this was my first time interacting with you, and it has been really an enlightening session. I think we do need to bring you over to Lahore for a larger session, because there's still so many questions that I had to, stop people from asking a back channel. So I would love to interact further with you, but thank you so much for so comprehensively, patiently, listening to the questions and answering them as well. We once again collectively wish you a very happy birthday and a blessed year. And thank you so much for your time here with us today. And thank you so much, everybody, all of you who have participated, part of the Young Leaders Program. We will now end this session. And thank you, Dr. Hassan, for being here with us. Over and out, sir. Thank you. You are mute. I said future leaders, अब responsibility आपके shoulders पे है. हम लोग शायद उस तरह deliver नहीं कर सके, लेकिन आप लोगों ने, find the true potential in Pakistan and leverage that. Absolutely. Together, collectively, we'll make it happen, inshallah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everybody. We'll end the session now. Thank you for your presence here. Bye.